बच्चों मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या बताए थे, अल्फा अमीनो एसिड बताए थे, राइट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। उसमें एक चीज मिस्टेक हो गई, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टायरोसिन, इसका थ्री लेटर क्या होता है? टी, टायरोसिन TYR। हाँ, ठीक है बच्चों, दिस इज पैरा पोजीशन पे OH, C6H4CH2। ओके गाइस, ये होता है टायरोसिन। अब आते हैं ट्रिप्टोफैन, TRP। ओके गाइस, एंड दिस इज essential, and this is this बच्चों। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? इसे लर्न कर लेना, मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड द थ्री लेटर सिंबल एंड वन लेटर। अभी पता चल जाएगा क्यों। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इसमें एसिडिक ग्रुप भी है COH, और बेसिक ग्रुप भी है NH2। तो अमीनो एसिड्स give salts with both acids and bases। दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, बिकॉज इट कंटेन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। अब आते हैं पेप्टाइड्स। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किसका बच्चों? प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर बिट्स known as peptides that ultimately finally वो पेप्टाइड भी क्या देते हैं? ultimately give अल्फा अमीनो एसिड्स। पहले पेप्टाइड फिर अल्फा अमीनो एसिड्स। तो पेप्टाइड हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज अ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अल्फा अमीनो एसिड। एक का कार्बोक्सिल ग्रुप कंबाइंस विद दूसरे का अमीन ग्रुप। एज अ रिजल्ट a water molecule is eliminated and a peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भाई? COOS था, प्लस NH2 है, NH2 और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, यहां से H गया, यहां से
ओ एच गया, वाटर एलिमिनेट हुआ, एसिड और अमीन में से वाटर एलिमिनेट हुआ, एंड यू गेट सी डबल बॉन्ड ओ एन एच. दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? मैं लिख देता हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ, सी ओ ओ एच प्लस दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का NH2, यहां से H गया, यहां से OH गया, ये बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच. फाइन. अब ये जो बना है, हमने एक ये अल्फा अमीनो एसिड लिया, एक ये अल्फा अमीनो एसिड लिया, तो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड. Dipeptide does not mean two peptide linkages. It means two alpha amino acids combining. Dipeptide, di is indicating that two amino acids are linked by a peptide linkage, by a peptide bond. तो अगर मैं ट्राई पेप्टाइड देखता हूं तो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड 3 है और कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. 3 अल्फा अमीनो एसिड को अगर कंबाइन करते हो, यू विल गेट अ ट्राई पेप्टाइड एंड देयर विल बी 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स इन दैट स्ट्रक्चर. अब गाइस देखो, ग्लाइसिल एलेनिन, ओके, या तो पूरा नाम लिखा होगा ऐसे, या 3 लेटर की फॉर्म में लिखा होगा GLYALA, या फिर लिखा होगा GA. अब इस डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड है, 2 अल्फा अमीनो एसिड से बन रहा है, डाइपेप्टाइड है. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हम कहेंगे पहले पहले जो लिखा हुआ है पहले उसे लिखो, फिर जो सेकंड लिखा हुआ है वो सेकंड ना लिखो. मतलब डोंट चेंज द ऑर्डर जिसमें वो तुम्हें दे रखा है. और देखो, ये हमारा हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया एलेनिन. हाँ है ना? अब रिमेंबर, पहले वाले का OH और दूसरे वाले का NH2 का H. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्या देगा हमें? यहां से OH गया, यहां से H गया. दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? गुड. तो ये है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH. दिखा है नहीं दिखा गाइस? अब सपोजिंग मैं चेंज कर देता हूं. आई टेक एल नील ग्लाइसिन. इस बार एलेनिन पहले है, ग्लाइसिन बाद में. पहले वाले का OH, दूसरे वाले का NH2 का H. समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, श्योर. और ऊपर करना है? हो गया? ग्रेट. देखो बच्चों, तो पहले तुम एलेनिन बनाओ, फिर तुम ग्लाइसिन बनाओ, यहाँ का H यहाँ का OH. क्या देगा गाइस? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट गाइस. सीक्वेंस चेंज करोगे तो तुम्हारे पास जो पेप्टाइड बनेगा दैट विल बी अ डिफरेंट वन. मतलब ALA GLY इज डिफरेंट फ्रॉम GLY ALA. समझ गए बच्चों? तो अब जरा एक काम करो, जस्ट फॉर फन, AGF बनाओ. बताओ बच्चों. बना लोगे? तो ये स्क्रीन पे मत देखो, मैं बना रहा हूं.
समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो। तो हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार दिखा दो कि आपने इन्हें जॉइंट कैसे किया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों बनाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। या मैं इसको C6H5 ही लिखता हूँ जो ऊपर लिखा है। जस्ट सेकेंड गाइस। पहले वाले का, पहला कौन सा? ये ए। इसका COH से OH गया, यहां से H गया, ये आपस में लिंक कर गए। दिख रहा है? दिस इज वन पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा फिर यहां से OH गया, यहां से H गया, एंड यू लिंक देम। दिस इज योर सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राईपेप्टाइड। 3 अल्फा अमीनो एसिड से हमने ट्राईपेप्टाइड बनाया जिसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज है, CONH। कई बार रिवर्स में भी पूछ लेते हैं। रिवर्स में क्या पूछेंगे? दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर, जैसे ट्राईपेप्टाइड का स्ट्रक्चर दे दिया, और अब कहेंगे इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बताओ। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है भाई? इसको तोड़ो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH, एंड देन आइडेंटिफाई कि कौन से अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। समझिए गाइस, दैट इज द वे टू डू इट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, नेक्स्ट। कर लिया नोट? एस्पार्टेम। ओके गाइस, तो बच्चों पहले तो तुम इसके अंदर वो देखो क्या बनेगा। व्हाट इज दिस डाइपेप्टाइड? स्ट्रक्चर बना सकते हो। अभी एस्टर वाला पार्ट भूल जाओ। नॉर्मली देखो, एस्पार्टाइल फिनाइल एलेनिन का क्या स्ट्रक्चर होगा? बताओ गाइस। ये था हमारा एक, हाँ है ना? क्लियर है नहीं गाइस? तो मैं फाइनल बनाता हूं, ये NH, CH, CH2, C6H5, COH। क्लियर है गाइस? समझ गए? और इसका हमने मिथाइल एस्टर ले लिया, इस वाला को एस्टर बना दिया, COOCH3। दिस इज एस्पार्टेन। रिमेंबर गाइस, क्लियर है यहां तक? हाँ, डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ डाइपेप्टाइड, करेक्ट। अब आते हैं टेस्ट पे बच्चों। हाँ बेटा, स्पार्टिक एसिड चेक करो, इसका स्ट्रक्चर वही तो है। याद आ गया ना? टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। पहला निन हाइड्रेन टेस्ट। निन हाइड्रेन का स्ट्रक्चर याद है?
एक मिनट। नीन हाइड्रेट को तुम्हें याद होना चाहिए हमने कहां पे पढ़ रखा है। क्लोरल हाइड्रेट याद है? CCCl3 CHO होता है, उसके अंदर हाइड्रेट करोगे तो CHOH बन जाएगा। जेमिनल डायोल है, नॉर्मली दे आर अनस्टेबल, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन H of OH एंड Cl ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं बिटवीन Cl एंड एसिडिक हाइड्रोजन। उसी के टाइम में शायद मैंने ये भी बताया था, नीन हाइड्रोजन इज अनदर कंपाउंड which has geminal diols and it is stable। अब इस स्ट्रक्चर से शायद याद आ जाए। nin hydrogen test, this is a test for alpha amino acids। this is a test for alpha amino acids। nin hydrogen hydrate on reaction with alpha amino acids give purple color। okay guys, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, जेमिनल डायोल दिख रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? This is nin hydrogen hydrate, this is nin hydrogen hydrate, ये क्लोरल हाइड्रेट था, दिस इज nin hydrogen hydrate। नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं, ब्यूरेट टेस्ट। इट इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। वो अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए था, दिस इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ब्यूरेट क्या होता है पहले? इट इज NH2CO NH NH2। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये है, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन यूरिया, यूरिया तो याद होगा बच्चों, ये CO है, is heated। Fine। NaOH is mixed with test solution and drops of 1% CuSO4 is added slowly। Okay guys, clear है? A violet ring due to reaction of peptide bonds in proteins। पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे ये इट विल सर्व एज अ टेस्ट। और वो भी, पहले मैं ये लिख देता हूं, इट विल नॉट अकर इन फ्री अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स में नहीं करेगा, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसमें टेस्ट देगा। अल्फा अमीनो एसिड्स में तो पेप्टाइड बॉन्ड है नहीं, ठीक है ना गाइस? तो दे आर फ्री, दीज आर फ्री अल्फा अमीनो एसिड्स विच आर नॉट लिंक्ड टुगेदर, तो उनके आदि इट डजंट वर्क। इन फैक्ट एट लीस्ट टू पेप्टाइड linkages must be present। At least two peptide linkages
मस्ट बी प्रेजेंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब तुम्हारा डाई पेप्टाइड भी ये टेस्ट नहीं देंगे। डाई पेप्टाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। डाई पेप्टाइड भी नहीं देते क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटिक टेस्ट, ये क्या है? प्रोटीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 orange in alkaline solution। ऑरेंज कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये तब होता है, दिस इज ड्यू टू, गाइस, बेंजीन रिंग में कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है? हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ। दिस ड्यू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग इन, किसमें है बेंजीन रिंग गाइस? कौन से अल्फा अमीनो एसिड में बेंजीन रिंग है? एंड ट्रिप्टोफैन। ओके गाइस, हाँ स्पेसिफिक है जिनमें ये प्रेजेंट है। हाँ बेटा। फोर्थ, बेटा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, इधर ध्यान दो बच्चों। मिलियंस टेस्ट, HgNO3 ट्वाइस प्लस HNO3 प्लस ट्रेसेस ऑफ HNO2। ओके गाइस, तो प्रोटीन प्लस मिलन्स रिएजेंट give white PPT, on heating gives red PPT। Now this reaction to this is a characteristic, हाँ बेटा, this is a characteristic of phenols। ये जो है, दिस इज अ टेस्ट फॉर phenols। So it is given by proteins containing which alpha amino acid? बताओ भाई। टायरोसिन। करेक्ट, टायरोसिन। ठीक है बच्चों। निनहाइड्रेन टेस्ट, ये है इंडेन 1 2 3 ट्रायोन हाइड्रेट। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो बताएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर हाइड्रेट तुम्हारा निन हाइड्रेन है, तो ये क्या है? दिस इज इंडेन 1 2 3 ट्रायोन, डबल बॉन्ड हो, और हाइड्रेट करने में क्या बन गया हमारा? निन हाइड्रेन।
ठीक है गाइस। हाँ, तो दिस इज अ टेस्ट। ये टेस्ट मैंने पता। हाँ, ओ एच बन गया ना, सी डबल बॉन्ड होगा, जैसे तुम्हें याद है क्लोरल में हाँ हाँ हाँ, दिस इज डबल बॉन्ड हो। हाइड्रेट करने पे यू गेट ओ एच ओ एच। ठीक है गाइस, जेमिनल डायॉल बन जाता है बेसिकली, दे क्लोरल एंड क्लोरल हाइड्रेट, डबल बॉन्ड हो की जगह दो ओ एच लगा दिए, वाटर ऐड हो गया। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स, ये इन सब के लिए निन हाइड्रेन लिया, यू गेट अ कलर्ड प्रोडक्ट, यू गेट अ कलर्ड प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है गाइस, कर लिया नोट? गुड। ट्राई पेप्टाइड, क्वेश्चन दे रहा हूं, ऊपर कर दो। ऑलराइट, कर लेना। कितने प्रोड बन सकते हैं? ट्राई पेप्टाइड हम बनाना चाह रहे हैं यूजिंग ग्लाइसिन, एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। कितने ट्राई पेप्टाइड बना सकते हो गाइस? 6। हाँ, पीएनसी हो गया। सबसे पहले तो हमारे पास इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। हाँ बेटा बोलो। हाँ, क्लियर है गाइस? अच्छा, बाई चांस रेपिटेशन अलाउड होता तो? हाँ, वेरी गुड। ओके, कर लिया नोट? क्या कर रहे हो अभी नोट? ओके, पहले क्या लिखा? स्ट्रक्चर तो वही है। हाँ, वो यही है, यही है, रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? नहीं कर लिया गाइस? आगे चलें? नेक्स्ट, प्रोटीन्स are classified into two types on basis of their molecular shape. पहला आते हैं फाइब्रस प्रोटीन। When polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen bond, hydrogen and disulfide bond, then fiber like structure is formed. क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत। पॉलीपेप्टाइड चेन है,
if they are running in parallel and they are held together by hydrogen and disulfide bonds. That is fibrous protein. Such proteins are generally insoluble in water. They are generally insoluble in water. Example, keratin present in hair, wool, silk, myosin present in muscles. Okay guys, सेकंड पे आते हैं. ये था हमारा फाइब्रस प्रोटीन. अब आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स पे. This structure is when chains of polypeptides coil around to give a spherical shape. उधर हमारा chains were running parallel. Here they are forming a spherical shape. These are usually soluble in water. हाँ बेटा, ऊपर करना है. ओके, और ऊपर तो नहीं करना ना. Insulin and albumin are common examples of globular proteins. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? They are giving a spherical shape to globular proteins. Now structure and shape of proteins can be studied at 4 levels. Each level being more complex than the one before. Okay guys, first let us start with the primary structure. हाँ बेटा, बस 1 मिनट दो, कर लो नोट बेटा. टाइम लगेगा अभी नोट करने में. हाँ बेटा. हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है वी आर ट्राइंग टू सी हाउ अल्फा अमीनो एसिड्स, इन व्हाट सीक्वेंस द अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू गिव अ चेन. कि चेन में उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें विच अल्फा अमीनो एसिड इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट वन. ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? वही मैं लिख रहा हूं, प्रोटीन्स हैव one or more polypeptide chains. Each polypeptide, each polypeptide in a protein has amino acids, alpha amino acids
linked with each other. Polypeptide chains में the alpha amino acids are linked to each other in a specific sequence. In a specific sequence. And it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein. The sequence in which the amino acids are linked to each other, that constitutes the primary structure. Clear why नहीं हुआ guys? That's good. Protein. Okay. Any change in primary structure, any change in primary structure, in this primary structure, that is sequence, that is sequence of amino acids, creates a new protein, creates a new protein. भाई इसका मतलब ये हो गया ना कि स्ट्रक्चर मतलब एक तुम्हारा डिफरेंट कंपाउंड बन गया एक तरीके, ठीक है ना गाइस? अगर तुमने तुमने देखा था ना गाइस, ए और जी एंड ए दे आर डिफरेंट, राइट गाइस? इट क्रिएट्स अ न्यू प्रोटीन. अगर तुम प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हो, यू विल गेट अ न्यू प्रोटीन. दूसरे पे आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम? थोड़ा दूर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर को. अभी तो हम बिल्कुल वी आर लुकिंग एट कि कौन कौन से लिंक्ड है इन विच ऑर्डर. अब हम इसे थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करें. दूर से ऑब्जर्व करें क्या? इट रेफर्स टू द शेप, it refers to the shape in which a long polypeptide chain, in which a long polypeptide chain can exist. Okay guys, तो देखा गया they are found to exist in two types of structure, that is alpha helix and beta pleated. Sheet structure, sheet structure. These structures arise due to regular folding, due to regular folding of the backbone. Beta pleated structure, pleated. Beta pleated structure. These structures arise due to regular folding of backbone of polypeptide chain. फोल्डिंग हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन की. और ये फोल्डिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू एच बॉन्डिंग बिटवीन C double bond O and NH groups.
CO भी है हमारे पास, NH ग्रुप भी है ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड गाइस। क्लियर है यहां तक कि तुम्हारा इट इज अ फॉर्मिंग आइदर अ हेलिक्स और अ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर वही रखा, लेकिन उसका जो एक तरीके ओवरऑल शेप जो बन रही है वो हम देख रहे हैं, थोड़ा दूर से देख रहे हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन को। एंड वी आर ऑब्जर्विंग या तो अल्फा हेलिक्स बनेगा या तुम्हारा बीटा प्लेटेड बनेगा। बीटा प्लेटेड का मतलब अल्फा हेलिक्स को ऐसे मान के लो जैसे पेन के स्प्रिंग होते हैं ना, जैसे तुम्हारे क्लिक वाले पेन है, उनकी जो स्प्रिंग है, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू गेट इन अल्फा हेलिक्स। और अब तुम एक काम करो, स्प्रिंग पे मार दो हथौड़ा, पिचक गया वो, दैट इज अ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। मतलब उसको 2D में ले गए इंस्टेड ऑफ 3D। दैट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, प्लीट्स के फॉर्म में, शीट स्ट्रक्चर। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? तो मैं लिख देता हूं, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द is one of the most common ways in which a polypeptide chain polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw. हेलिक्स बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर with NH group of each amino acid H bonded to CO of adjacent turn of helix। ये लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। कर लिया नोट यहां तक गाइस? करो नोट बच्चों, ये है हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस? हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये देखो, हमें क्या लिखा हुआ था, राइट हैंडेड स्क्रू की फॉर्म में। ठीक है ना गाइस? ये राइट हैंडेड स्क्रू हो गया, दिख रहा है गाइस? दैट इज योर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब सीओ उसी साइड में जो NH है लोअर, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? कुछ समझ आया नहीं आया? यहाँ का CO यहाँ के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये ऐसे बनाएगा कोने पे, ये ऐसे बनाएगा, ये इधर बनाएगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? समझ गए ना? गुड। ये एन इस वाले के हाथ बना रहा है, इस वाले के हाथ। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब डार्क रेड वाले के हाथ, यहाँ का डार्क रेड CO, NH ऑफ एडजेसेंट डार्क रेड, CO ऑफ, इसे कौन सा कलर बोलेंगे गाइस? इसके ये इसके हाथ नहीं बना रही, एक्चुअली इधर बना रहा है। एंड मतलब आइडिया ये कोने का दिखा रखा है इन्होंने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इस टाइप का तुम्हारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। गॉट इट? तो बाकी तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बार पढ़ लो जो मैंने लिखवाया वो अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रेगुलर फोल्डिंग भी हो गया ना, कि कॉन्टिन्यूस एक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है हेलिक्स का। फैक्ट रिमेंबर है, ठीक है?
हाँ, जो मैंने बताया है वो याद कर लो, बस उतना याद कर लो, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अरे बेटा आवाज नहीं। ऑल पेप्टाइड चेन्स, ऑल पेप्टाइड चेन्स, ऐसे मान लो स्प्रिंग को तुमने पिचका दिया, चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच आउट हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी जब पिचकाओगे तो? दे आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। ओके, स्ट्रेच आउट हो गया, पिचक गया, एंड देन लेड साइड बाय साइड, which are held together by, which are held together by intermolecular H bonds. The structure resembles, बच्चों यहाँ पे तुम्हारा इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, ठीक है ना गाइस? द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द pleated folds of drapery, अरे पर्दे, and hence is known as beta pleated sheet structure। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। अब इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं बच्चों। ये तुम्हारा है, ऐसे समझो तुमने अल्फा एक्स को क्या कर दिया, पिचका दिया, ये एक हो गया, ऐसी दूसरा हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दे आर लेड साइड बाय साइड, दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लेड साइड बाय साइड, एंड बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? पूछ लेंगे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं तो याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा, उसमें तो एक ही चेन के अंदर बन लेते हैं। हाँ, हाँ वो अलग है। हाँ, गेटिंग द आइडिया ना? मैंने बस जो लिखवा दिया ना उसको ढंग से याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा। थर्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब है थोड़ा और दूर से देख रहे हैं हम, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम और थोड़ा दूर से देख रहे हैं। ओके गाइस, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स represent overall folding of the polypeptide chains। ठीक है ना बच्चों? कि हमें पता है अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा प्लीटेड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा और दूर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे। दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
और दूर से देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर फ्रॉम फार अवे। जब ऑब्जर्व करोगे तो यू रियलाइज कि उसकी एक्चुअल शेप क्या है। ठीक है ना बच्चों? बीटा प्लीट या अल्फा हेलिक्स कैन गिव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है ना गाइस? तो उसमें जो शेप आती है वो आती है, इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या तो फाइब्रस या ग्लोबुलर। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ग्लोबुलर में क्या बनता था? स्फेरिकल। गुड। अब आते हैं द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर H bonds, hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waal, and electrostatic forces. Van der Waal forces and electrostatic forces of attraction. कर लिया नोट बच्चों? फोर्थ पे आते हैं। मैंने दिखाया नहीं है, जस्ट लर्न इट। होती है डाइसल्फाइड लिंकेजेस। हाँ बेटा, वो होता है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमने एक और जगह भी पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। नाउ वी आर लुकिंग इवन फार्दर डिस्टेंसेस को, कि ओवरऑल शेप क्या जा रही है। ग्लोबुलर है, वो है। इसमें क्या है, अब जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनमें क्या होता है, मैं लिखता हूं इसको, सम ऑफ द प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। Proteins are made up of two or more polypeptide chains, and these are referred to as, these polypeptide chains are referred to as subunits. Okay, the spatial arrangement of these subunits, ये subunits आपस में कैसे arranged हैं, that gives rise to quaternary structure. The spatial arrangement of these subunits of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. कि जो दो हमारी, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, हाउ दे आर अरेंज्ड with respect to each other, that gives rise to quaternary structure बच्चों। just give me 1 second। बच्चों इसको देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहा है कि किसके बाद कौन सा अल्फा अमीनो एसिड लिंक्ड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये जो बीड्स दिखा रखी है, these represent different alpha amino acids. It is giving us a sequence in which those alpha amino acids are linked to give a polypeptide chain. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स भी होता है, बीटा प्लेटेड भी होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो सकता है अल्फा हेलिक्स कंबाइंड, मतलब वो एक स्फेरिकल शेप दे दे,
अल्फा हेलिक्स का हमने स्फेरिकल शेप बना दी, हाँ टर्शियरी में, तो दैट विल गिव अस ग्लोबुलर प्रोटीन। स्फेरिकल मतलब एक तरीके एंटेंगल टाइप, नॉट अ, हाँ कॉइल तुम्हारा मतलब ये ऐसे 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 चेन बन गई, समझ गए गाइस? सो यू माइट गेट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये बता नहीं रखा लेकिन ये ग्लोबुलर होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। दो सब यूनिट्स हैं, एक ये सब यूनिट, एक ये सब यूनिट। हाँ बेटा, हाँ दो सब यूनिट्स आ गई ना गाइस, एक ये वाली सब यूनिट और एक ये जो नीचे से ऐसे जा रही है, एंड हाउ दे आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट गिव्स राइज टू क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ हाँ, इसका और कुछ जरूरत नहीं है। अब आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बच्चों, प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम system with unique 3D structure and biological activity. Activity is called a native protein. When a protein in its native form is subjected to physical change like change in pH. अब फिर ये केमिकल चेंज आ गया, इसको पहले फिजिकल चेंज लिखते हैं, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच। अगर तुम पीएच चेंज कर दोगे या टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? द एच बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। ओके, ड्यू टू दिस globules unfold and helix gets uncoiled। ओके बच्चों, एंड प्रोटीन loses its biological activity। दिस इज कॉल्ड, बच्चों लिखते आओ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
during denaturation. Secondary and tertiary structures. सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से होते थे बच्चों? एच बॉन्डिंग के कारण. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड. लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर remains intact. समझ आ गया? The coagulation of egg white on boiling is example of denaturation. Okay. Another example is another example is hold on a sec, बच्चों. Curdling of milk caused by formation of lactic acid. Formation of lactic acid. ठीक है बच्चों. By bacteria present in milk. Got it, guys? फैक्ट रिमेंबर है ये सारा. अब आते हैं एंजाइम्स पे बच्चों. लेट अस गो ऑन टू एंजाइम्स. थोड़ा सा. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल catalyst. Digestion of food, absorption of appropriate molecules, and production of energy. ये तीनों ही occur in body, occur in body in a sequence of reactions. In a sequence of reactions and under very mild conditions. Mild conditions. ठीक है बच्चों. This occurs, ये जो हमने प्रोसेसेस की बात करी, these processes occurs with help of biocatalysts called enzymes. Almost all enzymes, all almost all enzymes are globular proteins. ओके बच्चों. अब enzymes are very specific for a particular reaction.
they are very specific for a particular reaction. मतलब एक टाइप का एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा. A specific for a particular reaction and for a particular substrate. And for a particular substrate. Got it, guys? Good. They are generally named after a compound. एंजाइम्स का नाम कैसे रखा जाता है? आफ्टर अ कंपाउंड और अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क. जिनके ऊपर ये कैटलिस्ट काम करते हैं उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा जाता है. अपॉन विच दे वर्क. जिन सबस्ट्रेट के ऊपर ये काम करते हैं, जिन कंपाउंड्स के ऊपर ये काम करते हैं, उन्हीं से इनका नाम पड़ता है. जैसे यहां तक कर लिया नोट. एग्जाम्पल, एंजाइम that catalyze hydrolysis of maltose into glucose. Glucose is named, correct, हाँ, maltase. ठीक है बच्चों, रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ. Just 1 second, guys. Maltase. कर लिया नोट गाइस? प्रॉपर नोट करो गाइस. बेटा वेट ही कर रहा हूँ. होल्ड ऑन अ सेक गाइस. हाँ बच्चों, तो sometimes enzymes are also named after the reaction where they are used. Where they are used. Example, enzymes which catalyze oxidation of one substrate and simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzymes. Oxidoreductase enzymes. Remember enzymes के नाम enzymes and with ace. एंजाइम्स के एंड में क्या लगा होता है? एस. क्लियर है? अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. Enzymes are needed
only in small quantities for the progress of reaction. Progress of a reaction. Enzymes क्या करते हैं? They reduce the activation energy. तुम्हें याद है इस काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने एक्टिवेशन एनर्जी. गुड. They reduce the activation energy. जैसे activation energy for acid hydrolysis of sucrose is reduced from 6.22 to 2.15 kilojoule per mole when hydrolyzed by enzyme sucrase. Clear है guys? कर लिया नोट? Properties of enzymes. पहली चीज, enzymes are highly specific. Specificity of enzymes. Each enzyme catalyzes only one reaction. Enzyme is specific to a reaction. Example, urease hydrolyzes urea and not N-methyl urea. Clear है guys? हाँ बेटा, कर लो नोट. कर लिया नोट? Second, enzymes are highly efficient. They are very efficient catalysts. They are very efficient catalysts. Third, small quantity is required. Can be highly efficient. Small quantity is required. Fourth, they work at optimum temperature and pH. अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे शूट कर गया तो दिक्कत आ जाएगी. पीएच बॉडी का ऊपर नीचे गया, दिक्कत आ जाएगी. ऑप्टिमम टेम्परेचर बीइंग 37 डिग्री सेल्सियस and optimum pH being around 7. Okay guys. Fifth, enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors जो इनहिबिट कर देते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम्स. कैटलिस्ट. यस. हाँ बेटा, कर लिया नोट गाइस? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? तीसरा पॉइंट देख लो. टेक योर टाइम. अभी तीसरे पॉइंट पे ही हो.
Enzyme inhibitors. Action of enzymes can be inhibited. मतलब रोक सकते हैं हम उसे. Can be inhibited by certain organic molecules called inhibitors. Inhibitors. Mechanism. सबसे पहले क्या करता है एंजाइम bonds with substrate. सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों रिएक्टेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है इन कॉम्प्लेक्स. तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट विल गिव अ एंजाइम प्रोडक्ट. गिव्स उसने सब्सटीट्यूट को एंजाइम जब कॉम्प्लेक्स बना गया सबस्ट्रेट के बाद उसके बाद इट विल कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट. ठीक है ना गाइस. एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया सबस्ट्रेट से एंड देन एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो गए. ये एंजाइम और ये प्रोडक्ट. क्लियर है गाइस. जैसे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में एक छोटा सा नोट. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक. क्यों स्पेसिफिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स. एंजाइम में क्या होता है स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्टिव साइट्स. वी कॉल देम एक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस. एंजाइम्स के सरफेस पे क्या होते हैं एक्टिव साइट्स. दीज एक्टिव साइट्स form weak bonds. They form weak bonds such as hydrogen bond and van der Waals attractions. With substrate molecules. Substrate molecule के साथ क्या बना दिया वीक बॉन्ड बना दिए एंजाइम ने. ठीक है बच्चों. नाउ ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट्स. Specific shape of active sites only specific substrates. भाई आइडिया इज स्पेसिफिक शेप होने के कारण स्पेसिफिक तुम्हारे पास रीजन होने के कारण तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है हैविंग अ पर्टिकुलर शेप कैन फिट इनटू दैट एंजाइम फिट विद दैट एंजाइम. ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट्स ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स. मतलब कुछ पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही तुम्हारे फिट इनटू द साइट्स लाइक की एंड लॉक. जैसे लॉक को मान के चलो लॉक तुम्हारा क्या हो गया एंजाइम और की हो गया सबस्ट्रेट. क्लियर है गाइस.
Getting the idea or not? Good. Once proper orientation has been achieved, once proper orientation has been achieved, substrate molecules react to form prods. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ नहीं, जो तुम्हारा एंजाइम है दैट इज योर लॉक, और उसमें स्पेसिफिक साइट्स होगी, जैसे जब तुम की घुसाते हो तो वो तुम्हारे एक पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर एक तरीके फिट हो जाती है उसके अंदर, इनसाइड दैट। तो वो लॉक के अंदर जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो की फिट हो रही है, दोज आर एक्टिव साइट्स। जैसे ऐसे देखो, मैंने ये बनाता हूँ, यू हैव अ फेयर एनफ आइडिया। वन सेकंड गाइस, हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। ये लिया मैंने, सपोजिंग दिस इज एंजाइम। हाँ बेटा ऊपर करना था, ये एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट तुम्हारा कैसा होना चाहिए, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग लाइक दिस विल बी योर, so that they can fit inside. Getting the idea or not? And once that proper orientation has been achieved, the reactant, the substrate will get converted to product. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ guys, clear to everybody or not? सॉरी मैंने डायग्राम गलत बना दिया, वन सेकेंड, ये फिर डिफरेंट होना चाहिए, ये मेरा ध्यान नहीं गया। Ideas completely they fit inside, just that was the whole point. Getting the idea or not? अरे को क्लियर है ना? ये कुछ इस टाइप से बनाया था मैंने, इसे चेंज कर ही देता हूँ। इट इज समथिंग ऑफ दिस काइंड। आवाज नहीं बच्चों प्लीज, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये क्या हो गया, मिट गया, मिट गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट। क्लियर है? दैट्स गुड गाइस। हाँ बेटा ये बनाना है, जो मैंने बना दिया वो तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, ठीक है ना गाइस? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने यहाँ तक? बनाओ गाइस, मेक इट।